Hey everybody. Good evening guys. Good afternoon. How are you all doing today? Hi Manish. This is our second lecture on mensuration. Earlier we had looked at two-dimensional mensuration, wherein we looked at triangles, quadrilaterals, polygons and circles. So two-dimensional is done. Today's agenda is three-dimensional. So we'll be looking at cubes, cuboids, so that basically four-sided three-dimensional figures. Then we'll be looking at cylinders. These are with circular bases, cylinders and cones. We'll be looking at hollow cylinder as well as a frustum of a cone. We'll be looking at spheres, hemispheres. So this is in today's agenda. Are you guys ready? Case study. Surana Kumar, I think you are in the wrong place, Surana Kumar. Case studies are going on in the next room where all the lawyers are sitting. That's where it's going on, not here. Hi Mohammed. Hello Gaurav, good afternoon. Hi Shreyashi. Hi Keshav. Okay, Sarvana Kumar, gotta block you. Okay, great. Chalo, shall we begin then? My name is Amit Surana. I have over 6 years of experience teaching quantitative aptitude. Please follow CAT Live daily on Instagram to get updates. And get yourselves added to these two Telegram groups as well for getting notifications on anything that we have planned. These are all the ongoing and upcoming batches. Get yourselves enrolled to them. You can also use my referral code Surana Life to get your 10% discount. These prices are about to change, so get yourselves a subscription real soon. Chalo start kare three-dimensional figures. First let's start with cube. A cube is a six-sided three-dimensional figure. I mean six-faced three-dimensional figure where each face is congruent to the other. That is, each face is similar to the other, right? So six faces, and here the length, breadth and height all will be the same. In a three-dimensional figure, a height is usually considered to be the third dimension. That is, one in the y axis, one in the x axis and the other in the z axis, correct? Y, x and z. So normally we consider height to be the one in the z axis. Height, you consider length or breadth either x or yx, whatever. Area of each surface, since each surface is a square, the area of that would be what? A square. Yes, square of your square of your side. Yes. And the total surface area, what do you mean by total surface area? Total surface area is basically curved surface area plus the bases. Yes, so curved surface area basically means the four walls. Yes, four walls, and when you consider the bases, you get the top and the bottom. This is like a room, a square room. Yes, if you consider all the walls, there are four walls. Four walls will be your curved surface area, walls.
If you consider the ceiling and the floor, then you consider the bases as well. Yes, since there are 6 faces, each face being equal to the other, the area is what? Total surface area is 6a square. And to find out the farthest point in a cube, what do you mean by farthest point? If this is a point that I am considering here, then the farthest point would be on the other side of the cube, right? Other side of the cube, this. These are the 2 farthest points, and if you want to find out the straight line distance between them, then you use Pythagoras theorem twice. Yes, you basically use Pythagoras theorem twice. The first time you use Pythagoras theorem would be for this. Yes, you find this out. So if this is a, this is a, this is root 2a. Then you use this as a side, this becomes a side, this is another perpendicular part, this is your farthest distance. This becomes what? Root 3a. Yeah, you get direct questions based on farthest points. Cool. Suhail, Suhail, this is a 2-hour session and I do not believe in going fast. There's no point in going fast. If you are hoping to go fast, then I'd suggest you leave the live class, come back, watch the recording at 2x speed. Okay. Volume of a volume of any given closed figure. Volume of any given closed figure is what? It's area. Yes, area times the height. Yes, area times the height, correct? So if you consider the area here, it is going to be a square, area of the base. Yes, area of the base is what? A square. And then the height. Height is what? A again. So a square into a is a cube. Always remember, area of base into the height. Yes. And the maximum volume of a cube in which a sphere of radius r is inscribed. This is a very specific property, I know, but if you get a question on this basis, you can easily answer it. Its area will be 2 times r by root 3. Yes, that is, if I were to inscribe a sphere inside of this, right? Inside of this, if I want to inscribe a sphere whose radius is r, then the area of the square, the maximum area of a square, it could be any big, but the maximum area of the square will be what? 2r by root 3, where it should be inscribed. Yes. Done everything clear with a cube. Now let's move to cuboid. In a cuboid you have 6 faces. Yeah, 2 faces having length and breadth as the dimensions, other 2 faces having length and height as the dimensions, and 2 more faces having breadth and height as the dimensions. Yes, just like a wall. Just like a wall. Yes, I mean just like a room. Yes, an elongated room if you look at it. Yeah, if you consider these 2 walls, they'll be probably length into breadth. If you consider these 2 walls, it will be length into height, and this 2 breadth into height, or whatever. Yeah, so this is a cuboid. Its total surface area. Total surface area is what? Curved surface area plus the area of the bases. Yes, area of the bases, which is basically what? All 6 sides. So L into B 2 times, B into H 2 times, and L into H 2 times. Got it? So if I consider this as length, this as breadth, this as height, you can do that, or you can consider this as breadth if you want the floor to be length into breadth, and this would be height. Yes, since it's a 3-dimensional figure, it depends upon your perception. If you're looking at it from the bottom, then the ceiling, wall, all that changes. Yes, the lateral surface area is excluding the top and the bottom. Do not include the top and the bottom, you get lateral, which is nothing but curved surface area. LSA, CSA are the same. I don't want you to remember formulae, that's why I am explaining all of this. Yeah, cool. So it's 2 times H into L plus B. That is what? These 2 walls and these 2 walls, left, right, front, back. Yeah, excluding the tops. That's it.
You don't consider the tops. Done. And the diagonal basically means what? The longest side again. Longest farthest points in a given cube is again this. Yes, this is your two farthest points on a cube. So how do you find this? You first find the hypotenuse of two walls, one wall, length and breadth ka hypotenuse you find out, which will be this. So if this is length, this is breadth, then the hypotenuse here will be what? L square plus B square ka square root, correct? Pythagoras theorem. Then you use this as a side and you find out the perpendicular distance between these two. So if this is height, then this is going to be what? Square root of L square plus B square plus H square. Done. And the volume is nothing but area of the base, that is length into breadth into the height. Let's move to cylinder. Cylinder is one with a circular base. Yes, a cylinder is basically formed by taking a rectangle. See, look at this image. If you look at this, you will understand there is a rectangle. Take that rectangle, yes, and then you curve it up. Yes, so rectangle का क्या होता है? Rectangle's length is the same as the circumference of the circle. Yes, rectangle का length of rectangle is the same as circumference of the base. Yes, and the breadth of the rectangle is basically your perpendicular edge height. Yeah, so for a cylinder you have two circular bases, one on the top, one on the bottom. The perpendicular distance between them is your height, which is h. Yeah, the radius of this is r. Okay, and to find the curved surface area, what do you do? Like I said, this part is just a rectangle, correct? This part is a rectangle. Yes, so rectangle ka area kya hota hai? What is area of a rectangle? It is length into breadth. In this case, length is what? The circumference of the base, that is 2 pi r, and what is breadth? Height. So curved surface area is what? 2 pi r h. Cool? Hi Nalin, hello. समझ गए? 2 pi r is the circumference, height is the perpendicular distance. Yes. Total surface area will be what? Curved surface area plus the bases. So curved surface area is 2 pi r h, and ऊपर में there is a pi r square because circle, नीचे में there is another pi r square. Yes. So 2 pi r h plus 2 pi r square. Total surface area of a cylinder will basically be what? 2 pi r h plus 2 pi r square. So if you take 2 pi r out common, you get h plus r. Yes, this is how you find out the total surface area of a cylinder. Lateral or curved, and also top and bottom. And its volume is what? Like I said, area of the base, this is area of the circle, into the perpendicular distance, height. Sorted? Guys, cylinder समझ में आया सबको? Say yes, hit like on this video. Great. Now let's talk about a hollow cylinder. What is a hollow cylinder? A hollow cylinder is where the insides of it is empty. So you basically just have the wall of it. Yes, cylinder में अंदर का कुछ भी नहीं होता है, it's just the wall, right? So if you are looking for the area of it, area cannot be found for the entire solid figure, but you can find out for the thickness, this thickness, है ना? जैसे कि pipe हो गया, hollow pipe हो गया, right? You can't find its area because and totally the area is the entire area, but if it is hollow, and if the area of the material is asked, area of the material, जैसे PVC pipes है, तो PVC कितना यूज हुआ, that area you can find out. Yeah, so thickness is nothing but R0 minus Ri. That is, if the greater radius from the center is R0 and the smaller radius, this is Ri or R1, whatever, then the difference between them will give you what? This thickness, है ना? ये thickness जो है, this is called thickness. This thickness
can be found out by the difference between their radii. And the curved surface area is going to be what? Because we are looking at only the curved surface area. यहाँ पे total surface area कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सर्कल नहीं है ना, ऊपर नीचे सर्कल नहीं है. You just have this, so it's 2 pi r naught h plus 2 pi r h. Getting it? दोनों का अलग अलग curved surface area. That's it. 2 pi r naught h plus 2 pi r1 h. तो इसमें 2 pi h अगर कॉमन ले लो तो क्या हो गया? r naught plus r1. Cool. ठीक है. And its total surface area, if technically we cannot find it out because it's just the thickness, but क्या है यहाँ पे? एक circular ring बनेगा, है ना, जो ring बनता है, ring, उस रिंग का एरिया आप निकाल सकते हो. अंदर तो खोखला है, ढक्कन नहीं है उसमें, वो खोखला है, बट इफ द मटेरियल थिकनेस थोड़ा ज्यादा है तो वो एक रिंग बनेगा, तो उसका एरिया, यस, एरिया ऑफ जस्ट द मटेरियल. समझ गए? बेस पे. सो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया. दिस इज व्हाट? एरिया ऑफ द रिंग, दैट इज 2 times pi r naught square minus 2 times pi r1 square. समझ गए? यस, r naught is greater than r1. ये आउटर सर्कल का है, ये इनर सर्कल का. यस. एंड इट्स वॉल्यूम विल ऑल्सो बी फाउंड आउट. वॉल्यूम मतलब अंदर भरने का चीज नहीं, जो इसके अंदर जाता है वो चीज नहीं, जो सराउंडिंग में है, राइट, उसका वॉल्यूम ये होगा. उसके अंदर जाने का वॉल्यूम क्या रहेगा? सो इफ आई आस्क यू, इफ आई पुट अप अ क्वेश्चन दैट इन अ hollow pipe at any given instance, what is the maximum volume of water? तो वो क्या होगा? मतलब क्या है? पाइप के अंदर जब पानी डालते हैं, जब वो फ्लो होते रहता है, तो एट एनी गिवन इंस्टेंस उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या रहेगा? दैट्स बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर. समझ गए? वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? पाई r1 स्क्वायर h. समझ गए? इसका हाइट जो है वो सेम ही रहेगा, हाइट इज द सेम, बट वॉल्यूम ऑफ दैट विल बी व्हाट? पाई r1 स्क्वायर h. 1 कौन सा है? छोटा वाला. Yes. Try this question out. First question on the screen. जल्दी से कोशिश करो. Sorry. एक सेकेंड. हाँ, चलो ट्राई करो. अवयव says 10, others Shreyashi says 10, Nalin says 10, very good. Manish says 10. So whenever you have instances when something is molten, yes, कुछ मेल्ट करके बना रहे हैं या उसको रिफॉर्म बन करके बना रहे हैं, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वॉल्यूम कभी भी कांस्टेंट रहेगा. वॉल्यूम इज कांस्टेंट. यस, मतलब इंडिविजुअल वॉल्यूम्स को ऐड करोगे तो बड़े वाले का वॉल्यूम आ जाएगा. इट्स बेसिकली टेकिंग वन बिग वाटर बॉटल और उसमें से आप 3 छोटे छोटे ग्लासेस में एम्प्टी कर रहे हो, तो पानी तो सेम ही हुआ ना, पूरा एम्प्टी अगर हो गया तो, है ना. So what happens here? You have a bigger cube, yes, जिसका साइज क्या, साइड क्या है? 12 inches. Yes, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? A cube which is
12 क्यूब, करेक्ट. सो इस 12 क्यूब को आप मेल्ट करके क्या बना रहे हो, यू आर मेकिंग 3 क्यूब्स. यस, जिसमें एक का है 12 इंचेस, यस, एक का है सॉरी या एक का है 12, एक का है 8. देर आस्किंग व्हाट विल बी द थर्ड वन. यस, मतलब क्या, इनका वॉल्यूम्स भी सेम रहेगा. सो 12 क्यूब शुड टेक्निकली बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विच इज 8 क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, इसको अगर x ले रहे तो x क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब विच इज सॉरी 6 and 8 ना, 6 रख लो, 6 क्यूब. Yes, so what is x cube basically equal to? 12 cube, that's going to be 144 times 12, 1728 minus 8 cube. 8 cube is how much? 512 and 6 cube, that is 216, है ना. So you have 512 plus 216 minus 1728. You get x cube as 1000. That means x will be 10 inches. Yeah. You can also do reverse engineering here. Reverse engineering भी कर सकते हो. ये a है आपका, इसको x है, इसको आप प्लग इन करो, ऐड करो 6 क्यूब और 8 क्यूब के साथ, चेक इफ इट फॉर्म्स 12 क्यूब और नॉट. Yeah, try the second question. Keshav Avyav says B. Nalan says B. Very good. How about others? We have to paint only its inner surface. This is your height, this is the radius. These are always perpendicular, okay? I'll tell you where you could use this, but अभी के लिए जान लो कि ये हमेशा perpendicular रहेंगे. Okay, so what are we to find out here? We are to find out what is the cost. So for cost we need to find out the surface area. Yes, top bottom जरूरत नहीं है, just the surface area. So first let's find out the curved surface area, which is what is rectangle. तो पहले इसका आप क्या निकालोगे? Circumference. Yes, what is given to us? Diameter is 7 feet. Diameter is 7 feet. So you can find out the circumference by doing what? Pi times d. So that is 7 pi, correct? Into what will be the height? Height is 22.5, correct? So this comes up to how much? 7 into pi is basically 22. So 22 into 22.5, that's nothing but 11 into 45. That's going to be how much? 450 plus 45, 495. Yes. Now
495 is the surface area, yes, square feet, yes, and for each surface, each square feet, it's 30 rupees, yes. So cost is going to be what? Cost is going to be 495, that is the curved surface area, into 30 rupees per square feet, which is 14,850, yes. Now in most cases ये हर वक्त नहीं लगेगा. डिस्क्लेमर स्टार डू नॉट छोड़ो, कंडीशंस अप्लाई. Okay, what is it? Since you have to multiply whatever value you have with 30, there are high chances that the answer will be a multiple of 30. ये जो भी आएगा that should be multiplied with 30, so there are high chances that your answer will be a multiple of 30. 30 मतलब क्या? 3 and 0, तो 0 से तो ये चला गया, बाकी क्या बचता है? 3. Yes, our answer should be could be a multiple of 3. Yes. 10, 16, this is not a multiple of 3. 5, 12, 17, not a multiple of 3. 10, 19, not a multiple of 3. Only answer that is a multiple of 3 is B, but then risky है क्योंकि ये integer होना ज़रूरी नहीं है. This being an integer is not necessary. ठीक है, इसलिए conditions apply. Okay. In some cases they will also give you including the base. तो अगर base भी include करना है, well के, borewell के base को भी include करना है, तो you're gonna have to add an extra pi r square to the curved surface area. ठीक है, चलो next question. Hit like on this video guys if you understood that question. Superb. Nalin says C. Others? Harshit says C. Beautiful. Longest beam. Correct, Harshit. Superb. Very good, Shreyashi. All you have to do is use Pythagoras theorem twice. Formula direct use कर सकते हो या logic से भी कर सकते हो, right? So let's say if I say that this is 12 feet, this is 9 feet, and this is 8 feet. ठीक है? तो the longest beam that can be placed is going to be this, है ना? ये कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर तक, correct? From this corner till this corner, yeah. So you know this length is 8 because ये 8 है तो ये भी 8 है. Now what do you want? You want this length, right? ये वाला part, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, तभी ये another right triangle बनेगा. Yes, so we need to find what that is what hypotenuse of 8, 9 and 12. Yes, so by Pythagorean triplets, what do you know? If one is 9,
the other is 12, then the next one will be 9, 12 and 15. Q 3:4:5, Pythagorean triplets. So you found out this is 15. ये वाला जो hypotenuse है वो 15 है, तो 8, 15 and next again by Pythagorean triplets. You know that अगर एक 8 है दूसरा 15 है तो the next will be 17. Done. Don't have to do any calculation. Calculation की कोई ज़रूरत नहीं है, just using Pythagorean triplets. Okay? या डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करोगे तो क्या, डायगोनल इज बेसिकली लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट. यस, विच इज व्हाट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. 144 प्लस 81 प्लस 64 adds up to 289. Square root of 289 is 17. ठीक है, डन. हाय प्रणव, 2022 के लिए अलग से अभी तो क्लास नहीं होगा. That should probably start in the month of November or December only. But you can watch the classes of 2021 itself. Those will be very much helpful. जो 21 के क्लासेस है वही देख सकते हो आप. In a cylinder, length and height दोनों सेम है. Length and height are both the same. हो रहा है. केशव says B 40,192 grams. Have your last 1 minute left. और कोई नहीं हुआ? Okay, so according to this, what is it? An iron pipe. Yes, an iron pipe is what? A hollow cylinder. Correct? Hollow cylinder. So if you take the iron pipe, yes, इसके अंदर एक और रहेगा, another surface. So this part is made of iron. ये hollow है, ये कुछ भी नहीं है, खाली है. Yeah, they've given this height to be 10 meters. 10 meters in terms of centimeters is how much? 10 meters centimeters में कितना हो जाएगा? 1 meter is 100 centimeter,
so this is going to be 1000 centimeters. ये 1000 centimeters है. Exterior diameter is 15, तो exterior radius will be 7.5. Sorry, interior 15 है, exterior 17 है, right? Interior is 15, exterior is 17. Yes, अपने को इसका वॉल्यूम ढूंढना है, द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट. तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस? द रेडियस विल बिकम, रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 17 माइनस 15 दैट इज 2, 2 by 1, 1 सेंटीमीटर का रेडियस है इसका, रेडियस ऑफ द थिकनेस 1 सेंटीमीटर. करेक्ट, समझ रहे हो? Yes, 1 centimeter का thickness है. We need to first find out the volume. So what is volume? Volume will be area of this, yes, this thing, that is pi times r naught square minus r1 square. That's area of the base into the height. Yes, so volume is what? Pi into, it's 22 by 7 into what is this? 17 का half. Yes, so pi times, pi बाहर ले लिया था ना, sorry, 17 by 2 whole square minus 15 by 2 whole square into 1000. This will give you your volume. बराबर? Are you getting this? So 17 का half is 8.5. 8.5 का square is 72.25 into this is 72.25 minus 15 का half 7.5. 7.5 square is 56.25. Yes, इन दोनों को subtract किया तो क्या आ गया? You get 16. Correct? So ये हो गया 16. So your volume is basically 22 by 7 into 16 into 1000. Or you can take 3.14 also, जो भी, whatever is comfortable for you. Yes, 16 into 3.14 into 1000 is your entire volume, 50,240 approximately. इसको you need to find the weight. Yes, this is in centimeter cube. What is given? 1 centimeter cube का weight कितना है? 0.8 grams. So 50,240 centimeter cube का weight क्या रहेगा? That into 0.8, which is 40,192 grams. So what's our answer? Option B. Got it? Understood, everyone? Yes. Okay, before we move ahead, there is a price hike that is coming soon for both Plus as well as Iconic. This is, the price hike is real, guys, and it's happening real soon. Probably end of this week. So before that happens, please go ahead and take the subscription if you're planning on taking. Use my referral code Surana Live for taking the subscription. Okay. Yeah. Now, so far what we have completed, we have completed cube, cuboid, we've completed cylinder and hollow. Yeah. Now let's move to cone. Yeah, so far what we've seen, the figures that we've seen were all uniform in area, correct? So if you take a cylinder, if you take its cross section anywhere, कहीं से भी आप बीच में से कट करोगे, if I cut it from here and find out this area, it's going to be equal to the area of the bases, correct? अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A होगा, इसका भी एरिया A होगा. Agreed? यूनिफॉर्म. क्यूब में भी सेम, आप क्यूब को कहीं से भी कट करो,
its area is going to be, surface area is going to be the same only. Base का area जो है वो same ही रहेगा. But in case of a cone what happens? Cone के केस में अगर आप कहीं पर भी बीच में से काटेंगे उसको, if you chop this off here, what will happen? This surface area will definitely be lesser than this. अगर ये A है तो this will be less than A. Correct? The surface area keeps decreasing at one point where it becomes almost nil. Yeah, this part is called its apex or top or whatever. Yes, and this is called the base. Yeah. तो एक कोन में, now in cylinder we had seen, cylinder में क्या है? The perpendicular height here, perpendicular height, this perpendicular height and this height are the same. ये दोनों same है. This is called height, this is called length. But in a cone these are two different dimensions. Yes. So for a cone, base का radius is the radius of the cone. Yes. If you draw a line perpendicular to the base, perpendicular to the center, that's your height h, and this side, this thing is called your slant height L. ठीक है, इसका क्या नाम है? slant height, or also called as length. Okay. Yeah, one thing is clear that this will be perpendicular. ये यहाँ पे perpendicular रहेगा. Okay. So volume is given by what? What is volume given by? Volume is given by area of the base into height. Yes. But since this is not uniform, since this is not uniform, ये अगर ऐसा होता, uniform होता, then we could have directly taken pi r square into h. Correct? But ये क्या है? ये एक सिलेंडर को 1/3 में स्प्लिट कर रहा है. This is one cone, this is another cone, this is another cone. So if you take a cylinder of the same base and same height, you can fit in 3 cones of the same base and same height. एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे. समझ रहे हो? टेक्निकली द वॉल्यूम, नॉट फिजिकली आप नहीं डाल सकते, फिजिकली 3 कोन को नहीं डाल सकते क्योंकि वो बेस अड़ेंगे. बट इफ यू मेल्ट देम इट्स ऑल द सेम, विच इज नथिंग बट 1/3 द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. ठीक है. बेस का क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर. इन केस ऑफ h इट गेट्स 1/3 ऑफ द हाइट. या स्लैंट हाइट L, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इट्स बेसिकली h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर विच इज हाइट, r स्क्वायर रेडियस, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया, सिंस दिस हाइट डजंट मैटर एनीमोर. Yes, this height doesn't matter anymore. So what do? You go around in this manner. ऐसे है ना, ऐसे घुमा रहे हो उसको. तो when you do that, so if you take आपको मूंगफली खाते हो, मूंगफली, right? The paper that they take, it's a rectangular paper. तभी उसको फोल्ड करने पे क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, अंदर ओवरलैपिंग होता है, राइट? बट इफ यू कट ओपन अ कोन, मतलब जो पार्टी हैट्स वगैरह होते हैं उसको आप काटोगे तो व्हाट विल यू सी? यू विल बेसिकली सी समथिंग लाइक दिस, है ना? यू विल बेसिकली सी समथिंग लाइक दिस. यस. तो आपका रेडियस विल बी दिस पार्ट, दिस इज योर रेडियस. या तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? लुक एट दिस. व्हाट इज दिस पार्ट? दिस पार्ट इज योर हाफ टाइम्स द सर्कमफ्रेंस. करेक्ट? इसको आप पूरा कर देते हो तो पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, नहीं तो अभी क्या है? हाफ टाइम्स द सर्कमफ्रेंस. तो हाफ द सर्कमफ्रेंस विच इज 2 पाई आर का हाफ, पाई आर, और ये एल. समझ रहे हो? ये एल, ये एल क्या है? दिस इज बेसिकली h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट. सो पाई टाइम्स r टाइम्स एल. यस. एंड टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस. बेस क्या है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर को आप कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर.
Got it? Understood, guys? Now let's talk about a frustum. So cone आ गया ना समझ में, you understood a cone. Now what happens if you cut the top of the cone? आप cone को ऊपर से काट देते हो, ऐसे काट देते हो, and then you solidify it. Yes, उसको काट के आप उसको solid कर देते हो, तो क्या हो जाएगा वो? It will become a inverted bucket. Correct? Bucket ऐसे होता है. This is a bucket. इसको आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? This is a frustum. मतलब इसको अगर आप पूरा कंप्लीट करोगे उसी रेट पे अगर आप डिक्रीज करते जाओगे तो वो कोन बन जाएगा, है ना? दैट्स कॉल्ड अ फ्रस्टम. सो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्रस्टम. फ्रस्टम क्या है? दिस. सो दिस इज द हाइट ऑफ द फ्रस्टम. यस, दिस इज इट्स रेडियस. Now for a frustum directly finding out becomes very difficult. तो आप इसको क्या करोगे? इसको आप complete करोगे, right? You complete it. Yeah, you can find out its area by completing it and then finding out the area of that particular right triangle. इस triangle का आप area ढूंढ सकते हो, ठीक है? So its volume is basically 1/3 of pi times h into r square प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर. यस, तो आर क्या है? ये है बड़ा आर. दिस इज आर, क्योंकि यहां पे भी एक सर्कुलर बेस है. दिस पार्ट इज योर स्मॉल आर. यस, ये बड़ा आर, ये स्मॉल आर, ठीक है? एंड h इज दिस. यू कैन ऑल्सो डू फ्रस्टम बाय कंसिडरिंग इट एज अ कोन एंड देन फाइंडिंग आउट इट्स सिमिलर एरिया, है ना? ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, पूरा कोन और ऊपर का कोन सिमिलर रहेंगे. तो और डायरेक्ट फॉर्मूला इज दिस 1/3 ऑफ पाई टाइम्स h. दिस इज बेसिकली व्हाट? आर स्क्वायर प्लस आर टाइम्स आर, ठीक है? और पाई टाइम्स h बाई 3 इंटू आर प्लस आर द होल स्क्वायर माइनस आर टाइम्स आर, जो भी. इट्स स्लैंट हाइट h l. दिस हाइट इज गिवन बाय व्हाट? इसका पूरे का हाइट, पूरे का स्लैंट हाइट माइनस इसका स्लैंट हाइट. करेक्ट? दैट्स नथिंग बट h स्क्वायर प्लस r माइनस r द होल स्क्वायर का रूट. यस, समझ रहे हो? एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी व्हाट? पाई टाइम्स l इंटू r प्लस r. यस, तो इसका कैसे होता है? इट्स बेसिकली बाई 2 बाई 2. इसका एवरेज ले रहे हो, ऊपर का और नीचे के रेडियस का एवरेज ले रहे हो और 2 पाई r का ये लगा रहे हो, राइट? सो दैट गेट्स कैंसल्ड ऑफ. सो व्हाट डू यू गेट? r प्लस r. यस, एंड द टोटल सरफेस एरिया विल बी व्हाट? नीचे का सर्कल पाई r स्क्वायर कैपिटल R, ऊपर का सर्कल पाई r स्क्वायर छोटा r. यस, एंड द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन अगर ढूंढना है, इसका ओरिजिनल हाइट ढूंढना है, जो ये क्या होता अगर ये पूरा कोन होता तो ये क्या होता? इफ यू वांट टू फाइंड आउट देन व्हाट कैन यू डू? यू कैन यूज r इंटू h बाई r माइनस r. यस, ये क्या कॉन्सेप्ट है? दिस इज सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्सेप्ट. यस, पूरे का और इसका आप रेशियो निकाल रहे हो, रेशियो. सो रेशियो ऑफ r एंड ये क्या होगा? r and just this part, the difference part is what? r by r minus r, है ना? ये रेशियो है आपका. यस, इसको आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका ये वाला हाइट मिल जाएगा, दिस हाइट. आई होप यू गेट दिस. आ गया ना समझ में? या now let's move on to sphere. A sphere is a 3-dimensional figure, but it's not just a circle made into a 3-dimensional figure, right? ये sphere क्या होता है? सर्कल है, इसके ऊपर एक छोटा सर्कल, इसके ऊपर एक छोटा सर्कल, इसके ऊपर ऐसे इन्फिनाइट सर्कल्स चलते जाएंगे ना, ऊपर और नीचे की ओर. देन यू गेट अ स्फीयर. करेक्ट? जैसे अर्थ के प्लेट्स होते हैं,
yes, plates on the earth, it's like that. This is how your sphere is formed, right? So if you want to तो sphere के लिए there is no height and all, क्योंकि it's a circular figure, तो उसका सिर्फ radius consider होता है. Yes, so volume is what? 4/3 pi r cube. Yes, 4/3 pi r cube. So you find out this radius. ये भी इसका radius है, ये भी इसका radius है. Yes, so 4/3 times pi r cube is the volume of your sphere. Got it? इसमें क्या है? पाई आर स्क्वायर तो आपके बेस का एरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बेस नहीं है. टेक्निकली यहाँ पे कोई स्फीयर में कोई बेस नहीं होता है. करेक्ट? स्फीयर इज बेसलेस. वो आप रखोगे तो वो रुकेगा नहीं, इट विल कीप रोलिंग, राइट? सो पाई आर स्क्वायर इज बेसिकली द क्रॉस सेक्शन का एरिया इनटू इट्स हाइट इज 4/3 ऑफ द रेडियस. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं है इसलिए हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, और 4/3 r is its height. समझ रहे हो? I hope you're getting this. And its surface area, यहाँ पे curved total कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है. यहाँ पे TSA, CSA सब सेम है क्योंकि कोई बेस नहीं है, which is what? 4 times pi r square. 4 times area of the cross section. ठीक है? Cross sectional area. या एंड इसी को अगर मैं हॉलो कर लूं, मतलब अंदर से इफ आई रिमूव द स्टफ ऑफ, yes it will still be a closed thing but it will be hollow on the inside. Yes, so if I hollow it out then what happens? The thickness, तो hollow क्या हो जाएगा? You will have another sphere जिसका सेंटर कॉन्सेंट्रिक रहेंगे, उसके जो बेसिस हैं, सॉरी उसके जो क्रॉस सेक्शन है वो कॉन्सेंट्रिक रहेगा, सेम सेंटर. यस, इंटरनल आर है छोटा, एक्सटर्नल बड़ा आर है, आर. या तो ये जो थिकनेस है, दिस पार्ट मटेरियल का थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेडियस, एंड इट्स वॉल्यूम विल बी व्हाट? इसका वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम. यस, एंड इट्स एक्सटर्नल अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो इट्स जस्ट बेसिकली कैपिटल आर. वही इंटरनल निकालना है, इंटरनल सरफेस एरिया, जैसे अंदर पेंट करने का कितना पैसा लगेगा, ऑल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, दैट्स बेसिकली 4 times पाई छोटा आर स्क्वायर. यस, गॉट इट? दिस इज वॉल्यूम ऑफ व्हाट? मटीरियल. Done. And a hemisphere is basically a sphere cut off on the top. अगर एक स्पीयर को आप ऊपर से काट दोगे, सॉलिड स्पीयर है ना, सॉलिड स्पीयर like an orange. If you chop it off from the top, ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? सर्कल रहेगा. करेक्ट? मतलब एक हेमिस्फीयर हैज अ बेस, बट अ स्पीयर इज बेसलेस. So a hemisphere will have your radius r. तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हाफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर. वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज 4/3 pi r cube. तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर विल बी व्हाट? हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर. बट एरिया वैसा नहीं है, राइट? कर्व्ड सरफेस एरिया वैसा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अपन टॉप नहीं कंसिडर कर रहे, वी जस्ट कंसिडरिंग दिस एंटायर एरिया. तो इसका क्या है? सेम 4 pi r square, हाफ ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. बट यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया रहेगा, दैट इज व्हाट? इंक्लूडिंग द टॉप. टॉप का एरिया क्या है? pi r square. सो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस pi r square, which is 3 times pi times r square. ओके, और इसी को अगर मैं हॉलो आउट कर दूं, लाइक अ बॉल, राइट? कटोरा, बॉल, राइट? इफ यू टेक अ बॉल, यू हैव जो मटेरियल, लेट्स से इफ यू हैव अ ग्लास बॉल, जो ग्लास का मटेरियल है दैट काउंट्स, है ना? तो एक हॉलो हेमिस्फीयर में क्या होता है? देयर इज थिकनेस
मतलब 2 रेडियस रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक है तो 2 रेडियस रहेंगे, बड़े वाले का r, छोटे वाले का r. Yes, the difference between both these lengths, this part is the thickness. Thickness of what? The material. Yes. वॉल्यूम में क्या होगा? दोनों का डिफरेंस 2/3 पाई r क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटा r क्यूब. एंड इट्स इंटरनल सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ अंदर का रेडियस मैटर करेगा, 2 पाई r स्क्वायर. अगर बाहर का है, सॉरी, बाहर का है तो 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट. बाहर का सरफेस एरिया चाहिए तो वो, अंदर का सरफेस एरिया चाहिए तो. एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिंग, रिंग मतलब क्या? दिस पार्ट. रिंग इज जस्ट दिस पार्ट. ये सिर्फ इसका एरिया चाहिए तो व्हाट इज इट? पाई टाइम्स R स्क्वायर, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया. या सो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज दिस एंटायर थिंग, ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है, माइनस, सॉरी, प्लस द रिंग का एरिया. गॉट इट? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस रिंग का एरिया. ये इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपका बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये रिंग का सरफेस एरिया. डन. तो कोन, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, क्लियर है? एनी डाउट्स हियर? कुछ मगअप करने का नहीं है, देयर इज नथिंग दैट यू हैव मग्ड अप. मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब क्वेश्चंस करेंगे. करो, ट्राई करो. फर्स्ट क्वेश्चन. हाय संयम, कैसे हो भाई? हाय अमन. गुड, ग्रेट. हाँ, बस जी रहे हैं, आप लोगों की दुआ और क्या. सीरियस? नहीं नहीं, अभी बस तबीयत खराब हो जाएगी थोड़े दिन में. हुई तो नहीं है अभी तक, बट हो जाएगी. नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ. नहीं नहीं, सुबह से क्लास चल रही है, ये सुबह से तीसरी क्लास है इसलिए. Okay, Aman says the answer to this is A. What happened to your hair? मतलब क्या? मतलब बढ़ गए ये बोल रहे हो कि डाई कर दिया वो बोल रहे हो?
बाप दिखने की उम्र में दादा दिखूंगा तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना उसका. Guys, anyone answer? Okay, so there's a conical funnel, right? This is your funnel. Diagram है क्या? नहीं है. So this is your funnel. Yeah, this funnel goes up to like this. Okay, they're asking what is the volume of the largest metal ball that can fit in, है ना? Largest metal ball मतलब ये एक स्पीयर है, स्पीयर को यहाँ पे फिट इन करना है और इसके वॉल्यूम को जो है वी आर गोना हैव टू कीप इट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. क्योंकि ये स्पीयर है मतलब इसमें रेडियस और हाइट दोनों सेम है ना? मतलब इट्स ऑफ द सेम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. यस, तो इसका जो रेडियस है, लेट्स से रेडियस ऑफ द कोन कैपिटल आर, और इसका जो रेडियस है वो सेम नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर फिट इन नहीं होगा, है ना? इट वोंट फिट इन. यस, सो फॉर इट टू फिट इन यू गोना हैव टू reduce the volume, but reduce it in such a way that, so abhi what do we know? We know that the slant height is 13. Yes, cross section 10 है. Cross section means diameter. Cross section means diameter, right? The diameter is 10. तो रेडियस क्या होगा इसका? 5, है ना? इसका रेडियस क्या है? 5. सो इफ यू वेर टू फाइंड इसका हाइट, या इट्स हाइट, what will be the height? 5 is to what is to 13? जल्दी बोलो इसका हाइट क्या रहेगा? हाइट ऑफ द कोन 5 is to what is to 13? Pythagorean triplets. Yes, so we found out the height of the cone to be 12, right? Now what we have to do is we have to ensure that कि इसका जो radius है it has to be kept maximum but enough that it at least fits in. Yes, वो at least fit in होना चाहिए, है ना? तो अगर ये equal हुआ, right? Let's say if the radius of the sphere is equal to the radius of the cone, तो वो कितना अंदर जाएगा? How much will it go inside? Radius of the sphere and radius of the cone are equal, तो उसका volume क्या रहेगा? Volume of the sphere will basically be what? 4/3 pi r cube, correct? Which is 4/3 into 125 pi. Yes, this is how much? 125 into 4, 250, 500/3 pi. Yes, तो 237 तो उससे भी ज्यादा हो गया, समझ रहे हो? कोन है, ये कोन है, इसके अंदर में आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम, तो उसमें कैसे होता है? द स्पीयर डजन, जो आइसक्रीम का स्कूप है स्पीयर, वो पूरा अंदर नहीं जाता, वो ऊपर टॉप पे रहता है. मतलब जो आइसक्रीम स्कूप का जो रेडियस है और जो कोन का रेडियस है वो सेम है, करेक्ट? तो आधा अंदर जाता है, तो आधे में ही क्या हो रहा है? 500/3 हो रहा है, विच इज हाउ मच इज 500/3? 237, करेक्ट? 236.66 बार. एग्रीड, है ना? सॉरी, 166, नॉट 236, 166.66, है ना? तो you can't have 237, you can't have 100 also. Yes, very close, बहुत close है इसके.
तो इट्स गॉट टू बी ईदर 49 और इट हैज टू बी 51. एग्रीड? या तो 49 होगा या क्या होगा 61 होगा. यस. नाउ टू फाइंड आउट which one would it be, right? the pi. इसको अब जाने दो. ये कैलकुलेशन was just to eliminate the answer choice. Now the aim is what? कि रेडियस को थोड़ा थोड़ा करके कम करना है, रेडियस को कम करना है ताकि इट एग्जैक्टली फिट्स इन. यस, दैट इज, दिस इज बेसिकली व्हाट योर सर्कम रेडियस, सॉरी इन रेडियस. ये जो है ये इन रेडियस हो गया. एग्रीड? इसको अगर आप टू डायमेंशनली देखोगे, इफ यू लुक एट इट टू डायमेंशनली, इट्स बेसिकली योर इन रेडियस. या सो व्हाट इज द इन रेडियस? ये एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, करेक्ट? बिकॉज दिस इज 13, दिस इज 13 एंड व्हाट इज दिस 10. तो इसका आप अगर इन रेडियस निकालोगे, व्हाट विल इट, हाउ मच विल इट बी? ये इन रेडियस क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का? क्विकली टेल मी. इन रेडियस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. गाइस, आ रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे क्या चल रहा है? वी नीड टू फाइंड आउट द इन रेडियस ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? इसका इन रेडियस निकालोगे तो यू विल गेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर. यस. कितना आता है वो? Guys, are you able to hear me? Guys, ऑडियो आ रहा है क्या? ओके, ग्रेट. सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था. Yeah, so now I want you to look at this in a two-dimensional way. Okay, इसको two dimensionally देखो. This is our cone. ये आपका कोन है, ये आपका सर्कल है ना? This is the circle. मैक्सिमम मतलब क्या? इंस्क्राइब्ड होना चाहिए. यस, यू नो दिस इज द रेडियस. ये आपका रेडियस है 5, तो ये भी 5 रहेगा बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 5. ये 5, ये 5, मतलब दिस पार्ट इज हाउ मच? 8. एग्रीड? और यहां पे अब हमें पता है दैट द इन रेडियस विल बी परपेंडिकुलर, राइट? इन रेडियस विल व्हाट? बी परपेंडिकुलर टू द हाइट, है ना? एंड सॉरी, परपेंडिकुलर टू द स्लैंट हाइट, करेक्ट? इसमें इस साइड को परपेंडिकुलर रहेगा इन रेडियस, राइट? ये तो पता है ना, एंगुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो अब ये परपेंडिकुलर है दिस रेडियस. वी नो दैट दिस हाइट, ये जो हाइट है अपन ने 12 निकाल रखा है, राइट? दिस थिंग इज 12, करेक्ट? तो ये क्या हो जाएगा? दिस लेंथ इज व्हाट? 12 माइनस आर, क्योंकि ये पार्ट रेडियस है. ये डायग्राम मैं वापस बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं तो समझ में आएगा. ओके, दिस इज योर, ये आपका कोन है, ठीक है? सामने से देखने पे कोन इज अ ट्रायंगल, करेक्ट? दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन विच इज 5. यस, आपका सर्कल कैसे आएगा? ऐसे, somewhat like this. This is your circle. समझ रहे हो ना? अप्रोक्सीमेटली. ओके, इट्स सपोज टू बी टचिंग हियर, ठीक है? सो दिस पार्ट इज परपेंडिकुलर टू दिस. यस, और आपको
ये पता है कि ये r है, रेडियस ऑफ द सर्कल स्फीयर, और ये भी r है, तो ये पूरा 12 है, मतलब दिस पार्ट बिकम्स व्हाट, दिस पार्ट यहां से लेके यहां तक ये क्या है 12 माइनस r। आपको ये पता है क्योंकि ये पूरा 13 है, ये 5 है, तो ये 8 हो गया। सो दिस इज अनदर राइट एंगल ट्रायंगल। इससे आपको रेडियस मिल जाएगा। आर स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस वन ऑफ द साइड स्क्वायर, राइट। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस आर स्क्वायर माइनस 24r माइनस 64, करेक्ट। एग्रीड गाइस? सो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। व्हाट डू यू गेट? यू गेट 24r इज बेसिकली 144 माइनस 64, दैट इज 80, और r इज 80 by 24 और 10 by 3। एग्रीड गाइस? ये आया क्या आपको समझ में? ठीक है, तो यू गॉट द रेडियस ऑफ द स्फीयर नाउ। स्फीयर का रेडियस आपको मिल चुका है। अब आपको क्या ढूंढना है? उसका वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? ये अपन ने किया था यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सो दैट्स 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, दैट इज 1000 बाई क्या है 27। 3 क्यूब इज 27। एग्रीड? यस। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? हाउ मच इज इट अप्रोक्सीमेटली? 4/3 इंटू 1000 by 27, that's almost 49.38 pi. So what is our answer? 49 pi. समझ गए? I hope you got it guys. So we had eliminated 237 and 100 क्योंकि 237 is too high, yes, and 100 अपन ने देखा था कि हाफ इटसेल्फ इज 130 समथिंग। पूरा स्फीयर 130 है, उसमें से हाफ ही अंदर जाएगा। पूरा स्फीयर अगर होता कोन के डायमीटर जितना, तो वो हाफ ही अंदर जाता, तो उसका हाफ वाज लेस देन 100, तो हाफ से भी कम होगा, करेक्ट। हाफ से कम इधर 49 और 51, यू गॉट 49। ठीक है, चलो ट्राई दिस, quickly try this। To be kept in mind। कॉन्सेप्ट आज हो जाएगा ना मनीष? कॉन्सेप्ट्स अपन ने पूरे देख लिए हैं, कॉन्सेप्ट आज हो जाएगा। वी विल ओनली हैव प्रैक्टिस लेफ्ट, जो अपन स्पेशल में करेंगे। कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे, प्रैक्टिस स्पेशल पे।
एनीवन? लास्ट 30 सेकेंड्स लेफ्ट। मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन समझ लो, ठीक है? तो ये क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसमें दे थ्रो अ बॉल, ओके, जिसमें एक बॉल थ्रो कर रहे हैं, लेट्स से यहां से थ्रो कर रहे हैं। अब ये बॉल जो है इट इज गोइंग अराउंड द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ऐसे घूम के, फिर ऐसे घूम के, वापस ऐसे घूम के, ऐसे घूम के 7 बार चक्कर काटता है। 7 times it does and it reaches the bottom. Yes, they're asking what is this distance traveled. ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, कीपिंग इट एज मिनिमम एज पॉसिबल। ऐसे 7 राउंड्स काट रहा है। अब आ रहा है ये समझ में? चलो ठीक है, देखो नाउ लेट्स से दिस सिलेंडर वाज कट ओपन, ठीक है, बीच में से काट दिया हम इस पाइप को, तो इसको कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ रेक्टेंगल, करेक्ट? जहां पे ये हाइट, दिस हाइट इज व्हाट? इफ द पाइप इज 10 inches लॉन्ग, तो ये हाइट 10 inches है, yeah, and we need to know this. What is this? This is basically circumference of the circle, correct? Circumference क्या है? अगर इसका क्रॉस सेक्शन मतलब डायमीटर दे रखा है 10 inches diameter, then this becomes what? Circumference, that is pi times d, 10 pi inches, correct? अगर एक राउंड है, if it is taking 1 round, मतलब इस कॉर्नर पे है अभी बॉल इस कॉर्नर पे है, इट हैज टू गो थ्रू लाइक दिस एंड रीच द बॉटम, करेक्ट? अगर एक हुआ तो ये ऐसे होगा। एग्रीड गाइस एवरीबॉडी? अगर सिर्फ एक राउंड हुआ, नॉट 7 राउंड्स, जस्ट 1 राउंड, इफ इट रोटेट्स, इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस कॉर्नर, गोज लाइक दिस एंड रीचेस हियर, बराबर, एक राउंड में। अभी इसको आप फोल्ड करोगे, इफ यू फोल्ड दिस, इसको आप वापस अगर ऐसे बंद करोगे, फोल्ड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक राउंड हो जाएगा, करेक्ट? But now what are they saying? It doesn't take 1 round, it takes 7 rounds. मतलब ऐसे 10 पाई के कितने होंगे? 10 पाई के 7 लेंथ्स होंगे। 10 पाई 10 पाई 10 पाई 10 पाई करके 7 लेंथ्स होंगे। So total length क्या हो जाएगा? This entire thing will become 10 पाई 7 times 70 पाई, बराबर? और 70 पाई में अपने को क्या ढूंढना है? this. What is this? Hypotenuse. ये 90 है। Can you find out now? Our unknown distance d is what? 10 square plus 70 pi. Yes, the whole square का root. I hope you understood this. आ गया ये समझ में? तो इसमें 10 आप 10 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। 100, इफ यू टेक 100 कॉमन आउट, इट विल बिकम 10 times रूट ऑफ 1 प्लस व्हाट विल बी लेफ्ट? 7 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, दैट इज 49 इंटू 22 स्क्वायर बाई 49। तो ये गया। व्हाट इज 22 स्क्वायर? 484। So 10 times 484 plus 1, 485 root inches. आया ये समझ में? These are a little bit of advanced, थोड़ा सा advanced है ये, but I hope you understood this. दोबारा से समझाऊं? देखो which part? ये तो आपको समझ में आ गया।
ये वाला पार्ट समझ में आ गया कि अगर उसको जाना है तो 7 राउंड ऐसे काटेगा, सर्कुलर मोशन 7 राउंड। यस, सर्कुलर मोशंस में 7 राउंड, मतलब एक राउंड में पूरा एक सर्कमफ्रेंस कवर कर देता है। इन वन राउंड इट बेसिकली कवर्स वन एंटायर सर्कमफ्रेंस। यस, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे करके 7 राउंड है, ऐसे ऐसे करके 7 राउंड है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 राउंड है ना। सो एक राउंड पे अगर इसका लेंथ है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 10 पाई, तो 7 राउंड पे कितना होगा? 70 पाई होगा डिस्टेंस। एग्रीड? सो दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज को निकालना है। ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ है 10, दिस इज 90। समझ गए अभी नलिन? Yes. Shall we try the next question? 1 kilometer square. Huh? Anyone answer for this one? इवॉपरेटेड मीन्स उड़ गया पानी, धूप से सूख जाता है ना, दैट्स कॉल्ड इवॉपरेशन। वाटर टर्न्स टू वाटर वेपर, इवॉपरेशन। Nalin says C. चलो, so what you need to understand here is कि road is like this, है ना, ये रोड है, ठीक है। इस रोड का एरिया इज व्हाट 1 किलोमीटर स्क्वायर। यस, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। सो इट कुड बी 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर ऐसे, या जो भी 4 किलोमीटर्स इंटू 0.25 या 1/4 किलोमीटर, कुछ भी, राइट। द एरिया इज 1 किलोमीटर स्क्वायर बेसिकली, ओके। एंड दे सेइंग देयर इज अ 2 सेंटीमीटर रेन। तो अब रोड पे पानी जब जमा होता है,
ये तो सबको पता ही होगा, इंडिया में रोड पे पानी जमा होता है, तब कैसे जमा होता है? ऐसे ऊपर की ओर, करेक्ट? दिस इज हाउ वाटर गेट्स जमा हियर, आई मीन गेट्स कलेक्टेड, करेक्ट? सो व्हाट इज दिस हाइट? ये जो हाइट है ये पानी का हाइट है, कितना है ये? 2 सेंटीमीटर्स। समझ रहे हो? तो सबको मीटर में कन्वर्ट करो, पहले सबको मीटर में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर इज 1000 meters, which is nothing but 10 to the power 3 meters, करेक्ट? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर। एग्रीड? ठीक है। एंड इसमें क्या हो रहा है अभी? इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड ऑन रोड is basically what? Volume of this box that we just made out of the road. रोड को अपन ने जो स्विमिंग पूल बनाया वो, ठीक है? तो क्या है? इट इज 10 power 6 मीटर स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीmeters in terms of meters is what? We know that 1 meter is 100 centimeters. So 1 centimeter is 10 to the power 2 meters. So 2 centimeters is what? 2 into 10 to the power minus 2 meters. Yes. So 2 into 10 to the power minus 2 meters. Ultimately पूरा पानी, quantity of water is how much? 2 into 10 to the power 4 meter cube. इतना पानी जमा है। Clear? This is the amount of water. Now what are they doing? इसमें से आधा, half 50% gets evaporated, तो remaining 50% रहेगा, which is how much? 1 into 10 to the power 4, that is 10 to the power 4 meter cube. उसमें से ये क्या कर रहे हैं? एक स्विमिंग पूल में डाल रहे हैं, putting it in a pool, they pouring this water in a pool whose dimensions are given by 100 meters by 10 meters. They are asking height कितना होगा उसका, height कितना होगा? तो height of the pool will basically be equal to what? 10 to the power 4, that is volume of the water, by area of this thing, that is 10 square into, that is 10 cube. This is 10 meters. समझ गए? So what's happening here? It's like बड़े कंटेनर से आप छोटे कंटेनर में खाली कर रहे हो, बड़े कंटेनर से आप छोटे कंटेनर में खाली कर रहे हो, तो उसमें पानी का हाइट क्या होगा पूछ रहे हैं। तो इस कंटेनर में है तो यहां तक है हाइट, वही अगर ये छोटा होता, लेट्स से ये अगर ऐसा होता, कंटेनर को ऐसा कर देंगे तो पानी का हाइट क्या? इतना ही है। समझ रहे हो? दैट चेंजेस बट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। हाय हिमांशु, अंडरस्टूड गाइस? चलो ये ट्राई करो, सबसे इजी क्वेश्चन।
Okay, Nalin says B for this question, 3 centimeters. Others? वेरी सिंपल. मेल्टेड में मैंने क्या बोला था? व्हेन समथिंग इज मेल्टेड व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. करेक्ट. तो फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. करेक्ट. सो पाई आर स्क्वायर क्या होगा? रेडियस 4 है, सो पाई टाइम्स आर स्क्वायर 16 टाइम्स एच क्या है? 22.5. यस, यू नो 22.5 इंटू 2 इज 45, 90. तो ये कितना हो गया? 45 इंटू 4 विच इज 180 पाई. बराबर है. Yes guys, 16 into 22.5 is basically 8 into 45. Sorry, 360, not 180, 360. 4 times 90. 360 pi. This should be the volume of the spheres also, but इसमें से क्या है? 20% wastage. मतलब 80% रिमेनिंग. 80% रिमेनिंग. 80% क्या है? 4/5. सो 4/5 ऑफ 360 पाई इज रिमेनिंग, जो कि कितना है? 4 इंटू 72. 72 इंटू 4, 288 पाई रिमेनिंग है. इस 288 पाई को ये क्या कर रहे? दे आर मेकिंग इट इनटू 8 स्मॉल बॉल बेयरिंग्स. मतलब इसका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए. सो 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल बेयरिंग शुड बी इक्वल टू 288 पाई. करेक्ट. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल बेयरिंग? 4/3 पाई, जो भी आर है. लेट्स से आर इज द pi r cube. This into 8 is 288 pi. तो pi cancel हो गया. You have 288. So r cube is basically 3 into 288 by 32. This is how much? 288 by 32 is 9. 9 into 3 is 3 cube. So what is the radius of a ball bearing? 3 centimeters. Understood? So mensuration के questions simple हैं, काफ़ी simple हैं. Just that you need to know what is to be considered when. Yes. Shall I quickly try this? समझो क्वेश्चन को पहले. बिफोर गोइंग फॉर टेक्निकलिटी, पहले क्वेश्चन को समझो.
हाँ जी गाइस। लुकेश से सी, लुकेश बोल रहे हैं C5 revolutions. How about others? So what is given to us a cylindrical pulley है ना, तो it will be like this. Here a cylinder, yes, और इसके ऊपर जो है रोप होता है, यहाँ पे ना रोप वाउंड होता है, करेक्ट, रोप इज वाउंड, yes, and this is attached to a bucket. बराबर. अजय says D, नलिन says C. ओके, we'll look at this. तो अभी देखो कि जब सिलेंडर एक बार घूमता है, when one revolution happens, सिलेंडर का एक रेवोल्यूशन जब होता है तो कितना लेंथ कवर करता है, हाउ मच लेंथ इज वन रेवोल्यूशन कवर्ड इन टर्म्स ऑफ रोप, इसका सर्कमफ्रेंस, करेक्ट. वन रेवोल्यूशन of the cylindrical pulley covers what? One circumference length of the rope, है ना. तो first let's find out one circumference. Circumference कितना होगा इसका? पाई टाइम्स d, जो कि 70 दे रखा है, d is 70 diameter. So we need to find out the circumference, that is 70 times pi, which is 22 by 7, or 220 centimeters. Now they're saying कि कुछ some number of revolutions किए, उसने some revolutions किए, and the bucket raised by 11 meters. Bucket raised by 11 meters. Yes. तो ये 220 centimeter is basically what in terms of meters? या इसको मीटर्स में कर लो, जो भी. यस, सो actual distance covered, right? Actual distance covered or actual rope rolled is how much? 11 meters, which is nothing but 1100 centimeters. Yes, so you know which is nothing but number of revolutions into the circumference. Yes, तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस चाहिए, विच इज गोइंग टू बी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर इज गोइंग टू बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द सर्कमफ्रेंस, विच इज 220. दिस इज व्हाट? 5. सो देयर आर 5 revolutions. 5 revolutions happened when the bucket was raised by 11 meters. समझ गए? एक रेवोल्यूशन में 220 सेंटीमीटर्स कवर करता है, तो कितने रेवोल्यूशन में 1100 सेंटीमीटर्स कवर करेगा? दैट्स द क्वेश्चन. डन एवरीबॉडी? चलो, दिस इज योर होमवर्क. दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट लुक्ड एट. कोन के अंदर स्पीयर. yes, this is your homework. इसको आप try करना, try this at home and we'll discuss it tomorrow. Now what we are doing is a quiz. अभी quiz कर रहे हैं. We're doing a quiz on mensuration. Go open your Unacademy app. Quiz का ID I've shared in the group. I'll share it here also. Quiz का ID है sorry
959085. छोटा क्विज है, 10 क्वेश्चंस। आ जाओ जल्दी से, क्विक। 959085, क्विकली ज्वाइन गाइस। आ रहे हो क्या? ओके, नलिन एंड 2 others have joined. स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कोई और अगर ज्वाइन कर रहा है तो ज्वाइन कर लो फटाफट। 10 क्वेश्चंस है, मेंसुरेशन पे ही है पूरा। चलो स्टार्ट करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर परसेंटेजेस आपको याद है जो अपन ने किए थे तो यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यू रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फ्रॉम परसेंटेजेस? बहुत सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट। मेंटली कर सकते हो ये क्वेश्चन, यू डोंट रियली नीड pen, paper and all for this. Superb, 100% of you all. डिपेंड करता कितने लोग किए हैं। वेरी गुड नलिन, ग्रेट जॉब बड़ी। बहुत सिंपल था नहीं क्वेश्चन? Here's your second one. उस क्वेश्चन का हिंट देख लो। 1 लीटर इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू गाइज आर वॉचिंग द वीडियो ऑल्सो। यूट्यूब भी देख रहे हो ना? मैं हिंट दे रहा हूँ फॉर ऑल क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड नलिन। नो इश्यूज लुकेश, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन।
एक ब्रिक का डायमेंशन दिया है, पूरे रूम का डायमेंशन दिया है, पूछ रहे कितने जरूरत पड़ेंगे एक वॉल के लिए, फॉर वन वॉल। किसी ने आंसर नहीं किया। Again use multiplication factor. हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, सिंपल, सुपर्ब नलिन। थ्री सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3, ऐसा होगा उसका। ऐसा है, दिस इज हाउ द क्यूब इज, लाइक अ रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब के तरह है 3 × 3 रूबिक्स क्यूब। उसमें से ये बोल रहे हैं अगर इस एक को मैं निकाल दूं तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा एडिंग ऑल ऑफ देम। Superb. Assuming only Nalin. Or Nalin didn't answer. Ajay. Chalo, not bad. Try.
सुपर्ब। वॉल्यूम को रख के हाइट निकालो, हाइट को रख के एरिया निकालो। वेरी गुड नलिन। Initial radius. नहीं लुकेश, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H. आपने जो लिखा है that will give you L square B square H square. That's basically L into B into H the whole square. वो स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम हो गया। A cone is converted into a cylinder. Converted का क्या सीन है? What should be constant? Superb. हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके अंदर क्यूब जाना है। दैट इज लाइक इन अ बोल के अंदर आप आइस क्यूब या कुछ रख रहे हो, या प्लेसिंग अ क्यूब। हॉलो है, दिस इज हॉलो। इसके अंदर आप कितना बड़ा क्यूब रख सकते हो? लार्जेस्ट क्यूब, नॉट क्यूबॉइड, क्यूब। कितना बड़ा क्यूब रख सकते हो? So if this is the base of the cylinder, internal सर्कल ये है, तो आपका स्क्वायर ऐसे आएगा। समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस में 3D को 2D बना दो। ये आपका 3D में है, इसको कन्वर्टेड टू 2D, इजी रहेगा समझने में।
Very good, Nalin. Last question, one last. We haven't discussed prism. ये कल का है. Tomorrow's schedule. कल नहीं, Monday. March 22 का schedule है. 3 PM we'll be doing 3-dimensional mensuration का third lecture, where we'll be looking at prism, we'll be looking at pyramid. prism में भी बहुत सारे हैं. triangular है, you have क्या बोलते हैं, square prism. yes, मतलब ऐसे रहेगा. square prism is basically your cuboid only, but ठीक है. pentagonal, hexagonal, rhombus, हाँ rhombus का होगा, trapezium का होगा. पिरामिड में भी सेम. पिरामिड कैसा रहता है, नीचे का बेस कभी भी स्क्वायर रहेगा, फिर ऊपर ऐसे ट्रायंगल्स बनेंगे. दिस इज अ पिरामिड, है ना, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा. कंग्रेचुलेशंस नलिन. कुणाल लास्ट मिनट में आके सेकेंड प्लेस. नो इश्यूज. लुकेश, श्रेयसी, पंकज, अजय, कोई प्रॉब्लम नहीं. विल डू ऑल दीज टुमारो, है ना. प्रिज्म पिरामिड विल बी डूइंग टुमारो. prism and pyramid. Not tomorrow, Monday, that is. Monday go. Okay guys, thank you very much for being a part of this session. Tomorrow 12 PM you have your scholarship test. Please attend that. Use my referral code Surana Live. You can also use Ask a Doubt feature to ask your doubts if you are a member of Plus or Iconic subscription. Choose the subscription by using my referral code Surana Live. Get a 10% discount. Works even with Iconic. Thank you very much for being a part of this session. I'll see you all tomorrow. नहीं, कल कोई क्लास नहीं है. Tomorrow is Sunday. Tomorrow we don't have any class. I'll see you on Monday. Until then, keep yourself safe and happy. Bye bye. Have a great day ahead. Today 6 PM we have a special. 6 PM we have a special. आ जाना. We're doing previous year questions on percentages. Thank you guys.